Hello students, good morning. Today we are going to discuss about the data structures. We have the data structures, notes and terms. First of all, we will understand what is the data structure. Data structure is the method to define the data in a organized manner. We can use the data structure to store the data, okay, so that we can access and modify it efficiently. आप उसको we can access the data in future. We can categorize the data structures as primitive and non-primitive. Now we discuss about the primitive and non-primitive. Primitive data structure are those data structures which are the fundamental data types. Okay. And non-primitive data structure are those data structures which can be made up to with the help of the fundamental data types. So first we will learn about the stack and queue. Introduction to stacks. What is the stack? Stack is a data structure that provides temporary storage of data in such a way that the element stored last will be retrieved first. This method is also called last in first out. In real life, we can think of a stack as a stack of copies, stack of plates, stack of rotis, etc. The first plate put in the stack is last one to be removed. Similarly, last plate to put in the stack is the first one to be removed. So students, stack just like if we have an example of a bucket and in which we kept the plates one by one. So in the stacks we have only one end, that is called the top, and we insert the element from the top to the top using the top, and remove the elements from the stack using this only one end, that is called the top. Okay, so this method is called last in first out, means which element we kept in the bucket or any stack is in the last, that is first out. Okay, जो एलिमेंट आपका पहले आया है वो सबसे बाद में रिमूव होगा और जो सबसे बाद में आया वो पहले रिमूव होगा. Okay, so now we can do the different various operations on stack. Stack is a linear data structure. Linear data structure, here is the linear data structure means in this type of structure the elements stored in a linear way. Okay, it is controlled by two operations, push and pop. इसमें आप दो operations use करते हैं, push and pop. स्टैक एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है. लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का मीन्स है कि आपका जो एलिमेंट है उसकी लेवल्स जो है वो सिंगल रहेगा. ठीक है, और इसमें हम दो ऑपरेशंस यूज करते हैं, पुश एंड पॉप. बोथ द ऑपरेशंस टेक प्लेस फ्रॉम वन एंड ऑफ द स्टैक, यूजुअली कॉल्ड द टॉप. एक आप इसमें एक ही हमने बताया कि एक ही इसमें टॉप एक ही प्लेस यूज होगा जिसमें वन एंड यूज होगा जिसमें आप पुश भी करेंगे और पॉप भी करेंगे, दैट इज कॉल्ड द टॉप. पुश ऑपरेशंस एड्स एन एलिमेंट टू द टॉप ऑफ द स्टैक. पुश क्या करेगा, एलिमेंट्स को ऐड करेगा स्टैक की टॉप पोजीशन पे. पॉप ऑपरेशंस रिमूव करेगा एलिमेंट को स्टैक की टॉप पोजीशन से. These two operations implement the LIFO method. So implement of stack as a list. हम stack को as a list यूज करेंगे क्योंकि stack is just like a container and we can use as a list or linked list or any other data use. Stack can be easily implemented in Python using method of list. The basic operations that are performed on the stacks are creation of stack. सबसे पहले हम stack को create करेंगे. Stack just like the list, so we can make the empty list of stack can be created using the list with the help of the statement. सबसे पहले हम stack लिखेंगे इक्वल और लिस्ट का साइन, तो ये आपके क्या होगा, ब्लैंक एक लिस्ट आपकी क्रिएट हो जाएगी. दिस स्टेटमेंट्स क्रिएट एन एम्प्टी स्टैक. पुश ऑफ इंसर्शन इन द स्टैक. द पुश ऑपरेशन टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ अपेंड फंक्शंस. जब आप इसमें पुश करेंगे वैल्यू को स्टैक में तो अपेंड फंक्शन को यूज करेंगे. द अपेंड फंक्शंस एड्स द न्यू एलिमेंट एट द एंड एट द टॉप ऑफ द लिस्ट. जो आपका अपेंड फंक्शन है वो न्यू एलिमेंट को कहाँ पे ऐड करेगा, एंड पे, मींस एट द टॉप ऑफ द लिस्ट, लिस्ट की टॉप पोजीशन पे. ओके,
So pop deletion from the stack. How can we delete the element? The pop operation take place with the help of the pop functions. The pop functions removes the last topmost element from the stack implemented as a list. A pop function is used to remove the element. और कौन सा एलिमेंट विच रिमूव टॉप पोजीशन पे जो रखा होता है, ठीक है, लास्ट वाला. Before removing an element from the stack, it is necessary to check whether a stack is empty or not. Yes, to check whether the stack is empty or not, we can use the statement. सबसे पहले हम जब आप रिमूव करेंगे तो उसको चेक करेंगे कि उसके अंदर डेटा है या नहीं है, स्टैक खाली तो नहीं है. अगर स्टैक को हमने लिया है एम्प्टी लिस्ट के साथ कंपेयर किया तो डेट मीन्स वो आपका एम्प्टी है. ओके. सिमिलरली आप इसमें पुश में भी लगा सकते हैं. अगर पुश करना चाहते हैं, अगर स्टैक का साइज जो है आपका फुल हो गया, जो टोटल साइज है स्टैक का वो अगर इसके साइज से फुल हो जाता है तो स्टैक वहाँ पे हम मैसेज शो कर सकते हैं कि आपका जो स्टैक है वो फुल हो गया. इट इज इफ द साइज ऑफ द स्टैक इज फुल देन नो एंट्री विल बी अलाउड. डिस्प्ले या ट्रावर्सल ऑफ स्टैक. Display or traversal is a method in which we print each and every element of the stack. Display traversal implies visiting each and every element of the stack and displaying them. The display operation starts from the top position of the stack. Thus, to perform the display operation, we first calculate the length of the stack using a looping statement display each of the elements. Suppose करिए आपका एक स्टैक है, उसमें आपने 5 एलिमेंट्स लिए हैं, तो जो उसका साइज होगा वो आपका जो है 5 तक आपका फुल हो गया. फिर वहाँ पे उस पोजीशन पे उसकी लेंथ निकालेंगे यूजिंग द लेंथ फंक्शन और फिर हम लूप चलाएंगे लेंथ -1 बिकॉज इट विल फॉर लूप इज यूज टू 0 to n-1. और हियर वी कैन प्रिंट द स्टैक आई मीन्स 0 पोजीशन वैल्यू, 2 पोजीशन पे, 3 पोजीशन पे. लेंथ फंक्शन कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द स्टैक विच इज स्टोर्ड इन द वेरिएबल लेंथ. After this, for the loop is used, visit each element from length -1 to 0 and display it using print list. -1 से लेके और 0 तक. Remember, to visit and access element of stack, index values are used. So the first element of the stack is that index 0, stack 0. Second will be 1 and so on. Now we can see this the program implementation. Stack has a list. First of all, we create the empty stack equal to list. Answer y. Do you want to add more? Here इसमें एक looping चलेगी. While answer equal to y to push, pop and display. ओके. 1 करेंगे तो पुश होगा, 2 करेंगे तो पॉप होगा, 3 होगा डिस्प्ले. यहाँ हमने चॉइस एंटर कराई. ओके. चॉइस को कंपेयर कर रहे हैं. अगर 1 है तो आप 1 से मैच करेगा तो आपने क्या करना है, एंटर एनी नंबर स्टैक डॉट अपेंड ए पुश कर दिया. एलिफ चॉइस 2 स्टैक इक्वल टू चेकिंग फॉर एम्प्टी स्टैक एम्प्टी हो गया. ओके. एल्स प्रिंटेड डिलीटेड एलिमेंट. यहाँ पे पॉप की कंडीशन में हम चेक करेंगे पहले स्टैक के अंदर वैल्यू है कि नहीं है. ओके. अदरवाइज अगर स्टैक के अंदर कोई वैल्यू नहीं है तो स्टैक इज एम्प्टी. एल्स पार्ट में क्या होगा, डिलीटेड एलिमेंट स्टैक पॉप फंक्शन को यूज किया और ये आपका डिलीटेड एलिमेंट प्रिंट भी कर देगा. चॉइस 3 में लेंथ निकालेंगे 4i रेंज -1 से 0 तक ट्रैवर्सिंग ईच एलिमेंट ऑफ द स्टैक. ओके. एल्स में इनवैलिड इनपुट. आंसर में डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस करेंगे और नो करेंगे तो आपका ये इस टाइप से एग्जीक्यूट हो जाएगा. ओके. तो स्टूडेंट्स आज हम इतना ही रखेंगे. आप इसको कंप्लीट करिए, देखिए, ठीक है, और उसके बाद हम एप्लीकेशन ऑफ स्टैक पढ़ेंगे. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.